I feel old, yeah. Suddenly, 250 episode. Did you imagine? नहीं, honestly, Yeah, like 15 days. Yeah, I yeah, was yeah. approached, I was chosen, and then I was on set, and that too in middle of my wedding. Honestly, we've not replaced them because it's a different. I mean, yes, that's the name of the show is same, but and the that's an character. iconic show. सादगी से तो नहीं किया. राम साद- कपूर बहुत अमीर है शो में. But no, सादगी वाली बातें ना करें. sadgi in terms of playing it, the ease of playing it. Okay, firstly guys, good to see you. एक साल पूरा होने वाला है 30 अगस्त को. इट्स अ ग्रेट शो. बड़े अच्छे लगते हैं सब. मैं जब बात करता हूँ सभी महिला बहुत लोग फॉलो करते हैं, राइट फ्रॉम द यंगस्टर्स टू हाउस होल्ड. किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला इस एक सालों की बात करें नाउ, एक साल पूरे होने वाले, क्या कहना चाहोगे शो को? यार विशाल, 1 साल हो गए शो को, जैसे कि आपने ही कहा सभी बात करते हैं शो के बारे में. वहीं से समझ आ जाता है कि लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं. एंड आई थिंक इन टुडेज टाइम्स फॉर अ शो टू हिट अ ईयर विच इज़ अबाउट 260 episodes. Yeah, we finished 60. Yeah, 260 odd episodes. It feels, amazing. I feel old, yeah. Suddenly, 250 episode. Did you imagine? नहीं, honestly. Yeah, like Because like he said, it's not a usual. मतलब अभी आजकल इतनी कॉमन बात रही नहीं है कि शोज इतने लंबे चले because you know how it is. Yes. But being on air for almost an year is And being loved is yeah, beautiful. and being loved most importantly, I think Yeah. feels amazing. एंड आप दोनों की केमिस्ट्री बात करें, इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस. पहले भी शो आप लोगों ने किया था. ये शो को जब आप लोगों को पता चला कि आप लोग फिर से रीयूनियन करने वाले और शो के बारे में क्या था थॉट प्रोसेस आप लोगों की? Actually, I was very happy. मुझे मेरे लिए the show everything happened so quickly. I think within 15 days I was approached, I was chosen, and then I was on set. And that too in middle of my wedding. Yes. तो मैं तो ऐसे कैसे शो में आई हूँ मुझे पता है, but I was very happy and I knew that he's on board. And उससे 1 महीना पहले हम लोग मिले थे and we were discussing what's happening, what are you doing. That time we had no idea we were going to do the show together. I remember you asking, what is your plan? I said, मैं TV तो नहीं कर रहा अभी. Yeah, I remember this conversation. And then later when we did this, I think the first thing you asked me, you knew about this. I said, no, I had no idea about this, I asked man. him, you knew? And he's like, I had no idea. Like So zero. it was amazing and it was a very happy surprise. एंड राम और प्रिया का किरदार की मैं बात करूँ, जो पहले राम और प्रिया का किरदार था उनको काफी प्यार मिला था. एक जन को जैसा रिप्लेस करना, इट्स अ पार्ट 2. तो कितना चैलेंजिंग था लाइक स्टार्टिंग फेज में? Honestly, we've not replaced them because it's a different. I mean, yes, that's- the name of the show is same, but And the that's an character- iconic show. Like Yeah. we're not even. Not trying to be them or trying to replace them. The story was okay. The broad story would Yeah. be the same, but our characters are very different. Especially mine, his too. My Priya is very different from what the season 1 में जो Priya थी. And yeah, so I did not take any pressure like that कि oh हमें replace करना है या उनकी जगह लेनी है. No. हमारे लिए तो फ्रेश कहानी, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं. Exactly. पहले वो जो शो देखा था वो एज एन ऑडियंस देखा था. Correct. बट नाउ एज एन एक्टर्स यू अप्रोच इट वेरी डिफरेंटली. बट तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस फॉर लाइक राम का किरदार जो राम ने निभाया था काफी डिफरेंट किरदार था. इस राम के किरदार काफी डिफरेंट है. आपका थॉट प्रोसेस क्या था व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट द शो? मेरा थॉट प्रोसेस काफ़ी सिंपल था कि इसे मैं कैसे खूबसूरती से सादगी से प्ले कर सकता हूँ. एंड मेरा वही आई थिंक सादगी से तो नहीं किया. राम साद- कपूर बहुत अमीर है शो में. बट नो सादगी वाली बातें ना करें. सादगी in terms of playing it, the ease of playing it. You know what I'm saying? You can also, Ram Kapoor could also be this high-strung businessman, which Shivai was, Like which Ram that. is not. Ram is very. Ram is cute. So, but I mean, those are conscious things I chose to do, and तो उसमें कोई प्रेशर लगा ही नहीं यार कभी, क्योंकि you're not ever competing. Ram and Sakshi are both like icons and legends in Yeah, our you in our don't industry, compete right? with them. They are our seniors. Like we've grown up watching them. Yeah. So there is no like it's disservice to them अगर आप बोलो कि there's no competition. We are just trying to make sure कि उन्होंने जो इतना अच्छा खूबसूरत नाम बिल्ड किया था उसे हम खराब ना करें.